Jai Hind everyone. So today we will discuss about the screening procedure which happened on the SSB on day 1. In this video I will talk about the common mistake did by the candidates during the stage 1 and after they got screened out, and the procedure of the screening process and the tips or the advice from my side to get screened in to the other candidates from my experiences. So I'm talking about to the common mistake did by the candidates, that is writing the preconceived story. What story is said to be the preconceived? The story is said to be preconceived when the story is not related to a picture. मोस्टली होता क्या है, जब बच्चों को पिक्चर दिखाई जाती है, कैंडिडेट्स को पिक्चर दिखाई जाती है, तो उनके दिमाग में एक डाउट होता है कि यार 4 मिनट में स्टोरी नहीं लिख पाऊंगा, तो वे क्या करते हैं, जस्ट व्हेन द पिक्चर इज फ्लैश ऑन द स्क्रीन दे जस्ट स्टार्ट राइटिंग द स्टोरी, और उस टाइम पे वो पिक्चर को नोटिस नहीं कर पाते, देन द स्टोरी टोटली डिफर फ्रॉम द पिक्चर. So it is the high chance to get skin out in this scenario. The second one is the most common mistake is also that is your narration. While narrating a story, you fumbled a lot. So it is a clear-cut sign that you got skin out. Then the third one is that less participation in the group discussion or over participation in the group discussion. Some candidates are overconfident. They participate over in the group discussion and don't allow to others to make participation, and some are in the underconfident and they are not to try to to contribute into the group. Okay, then the third is the fourth one is that to making a unnecessary problem into the picture. Like while the picture is shown to you, you make a story in which you make unnecessary problem. The picture is very clear, there is nothing in the picture, and you make a problem around the outside. And the other common mistake is that you make a story with a general theme but very less action into the picture. So these are the common mistakes a candidate done and got screened out. So the tips from my side to get screened in, I will covering and the next step. So firstly, I will divide the whole screening process into 4 steps. Then first is your OIR, Officer Intelligence Rating Test. It is the important test in this screening. Some candidates say that OIR doesn't matter, but it matter, because in the defense, if any test is happen, so it has a relative purpose. So OIR matters. So firstly, I will say that you have to prepare for your OIR, okay, before your SSB, like 10 to 15 days before. Where you can prepare for OIRs? Nowadays in internet all the things are available. You can prepare your OIR from online books or offline books or the platforms, various platform, like in the textbook there are also some OIR sets. If you don't have these much time, so you can also prepare for our Telegram group. I uploaded some OIR sets which are also DIPR assisted, so you can also see them. Okay, they are very similar to the SSB's OIR. Okay, and then OIR प्रैक्टिस आपको बहुत ही नेसेसरी है. यहाँ पर आप जितना अच्छा रेटिंग करोगे, देन योर चांसेस टू गेट स्क्रीन इज वेरी हाई. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग्स, that is your picture perception and story writing. Third one is your narration and fourth one is your discussion. So total 4th segment में आपका screening process होता है. Each segment have the equal portion, 25% each. So 25% is your OIR, 25% is your picture perception and story writing, or 25% is your narration and 25% is your discussion. So 75% in a screening in your only hand, that is the individual performance. If you lack in the individual performance, that is the clear sign that you got screened out. Okay, so now move on to the picture perception and story writing. The most important thing or the segment in the screening process is that the picture perception. If you perceive the picture wrongly, then there is no chance you get screening.
So when the picture is flashed on the screen for a 30 seconds, so you have to observe the picture very carefully. Why I am saying that? Because मोस्ट टाइम क्या होता है, जब पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिखाई जाती है तो हम इस पिक्चर को ढंग से देखते ही नहीं हैं, जल्दीबाजी होती है लिखने की, वो नहीं करना है। अब पिक्चर को ऑब्जर्व कैसे करना है, हाउ टू ऑब्जर्व पिक्चर केयरफुली। फर्स्टली look at the picture, how many characters are there, their mood, their gender, their facial expression, they are looking in a neutral mood, they are looking in a positive mood, they are looking in a negative mood. And look at the attire of the characters, the clothing of the characters, they are in formals, they are in traditional wears, or they are in casual wears. And then look out the background. What is the background is there? It is a urban setting, it is a rural setting, it is a construction site, or it is a school site. So these minute details, if you notice in the picture, you got idea that how you make a story. So in 30 seconds में आपको पिक्चर को बहुत ही डिटेल में, जो मैंने डिटेल्स बताई है, आपको उस तरह से ऑब्जर्व करना है। जब आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, देन आपके पास एक्सपीरियंसेस से आपके सामने कुछ स्टोरीज की थीम आपके माइंड में फ्लैश होंगी। देन आपको वो थीम वहाँ पकड़नी है जो पिक्चर से रिलेट कर पाए और उस पर आप अच्छे खासे एक्शंस डाल पाओ। अब एक्शंस अच्छे कैसे आएंगे, ऑर्गेनाइज वे में कैसे आएंगी? देन इसकी होती है, देखो, या तो आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें की हैं जिससे आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा है अदर फील्ड्स की, तो आप अच्छे एक्शंस डाल सकते हैं। इफ़ आपके पास नहीं है नॉलेज, तो आप क्या करें, जो भी प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, इफ़ आवर टेलीग्राम ग्रुप पे होते हैं या फिर कहीं भी होता है, वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन यूज़ कीजिए, मतलब उनमें प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका जो एक्सपोजर है वो बढ़ेगा, जिससे आपकी स्टोरीज़ में एक्शन आएंगे। एंड द गुड अमाउंट ऑफ एक्शंस, नंबर ऑफ एक्शंस इन द PPDT स्टोरी, that is, if you add 6 to 7 action into this story, that is the good number of actions. तो सबसे पहले पिक्चर को बहुत क्लियरली ऑब्जर्व करना है, पिक्चर से बाहर इस आपकी स्टोरी नहीं जानी चाहिए, पूरे 30 सेकंड पिक्चर को ऑब्जर्व करना है। 4 मिनट एंड 1 मिनट जो आपको बॉक्स मार्किंग में मिलती है, 5 मिनट इनफ होती है आपकी स्टोरी राइटिंग के लिए। और आपका पार्ट अगर कोई बच भी जाता है तो आप बाद में कुछ पार्ट इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं while narrating the story. But if you waste your 30 seconds to writing the story, that is the clear stupid mindset. Okay, so पिक्चर को ऑब्जर्व करिए क्लियरली और उसी के अराउंड स्टोरी बनाना है। देन एक्शंस को इंक्लूड करना है। एक्शंस मैंने बताया आप कैसे इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। एंड ट्राई करना कि जब भी PPDT स्टोरी बना रहे हैं आप, देन आप जो मूड ऑफ द कैरेक्टर ले रहे हैं, या तो आप पॉजिटिव ले रहे हैं या न्यूट्रल। अवॉइड करना थोड़ा सा नेगेटिव को, ठीक है। वैसे इतना नेगेटिव मूड्स आते नहीं है PPDT में, बट फिर भी पॉजिटिव एंड न्यूट्रल लेना, अनलेस आपको बिल्कुल ही दिखे ना कि फेशियल एक्सप्रेशन नेगेटिव ही जा रही हैं। ओके, देन अगर हम बात करें, नेक्स्ट पार्ट इज योर नरेशन। सो नरेशन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो। वाई? बिकॉज इफ यू स्टक इन योर नरेशन और फंबल योर नरेशन, that shows you are not confident in your abilities. So practice well in narration. In my earlier SSB, I also got screen out in 4 times, but thereafter I never got screen out. Okay, why? I prepare my narration in a very well manner. I daily practice my narration, recorded my video on selfie camera, and reviewing myself that where I am lacking. So write a story on particular any picture, and thereafter make your video on selfie camera of your narration for 50 seconds or 60 seconds of your story, and thereafter reviewing it, like where I am lacking, where do I mistake. Okay, so in this way you can improve your narration day by day. I'm not saying that you improve after 2-3 days. It is a gradual improvement. You will improve day by day. Okay, thereafter the 4th part is your group discussion. That is the most
स्केरिंग थिंग इन दी कैंडिडेट्स, लाइक फिश मार्केट हो जाता है, बोलने का मौका ही नहीं मिलता है, कैंडिडेट्स इतना बोल रहे होते हैं, हमको टाइम ही नहीं मिलता है, कैसे बोलें, क्या बोलें, कितना बोलना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में, कितना नहीं बोलना चाहिए, चुप रहने से स्क्रीनिंग होंगे, ज़्यादा बोलने से स्क्रीनिंग होंगे, क्या होंगी। सिंपल सा तरीका है भाई, इट इज़ द ग्रुप डिस्कशन। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ग्रुप डिस्कशन? द पर्पस ऑफ द ग्रुप डिस्कशन इज दैट टू अराइव एट अ कॉमन कंसेंसस। मीन्स आपको एज अ ग्रुप एक कॉमन कंसेंसस पे आना है जिससे आप एक अच्छा स्टोरी निकाल पाएँ ग्रुप के रिस्पेक्ट में। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको सबसे पहले व्हाइल यू फिनिश योर नरेशन फॉरगेट अबाउट ए स्टोरी, लिसन अदर स्टोरी वेरी केयरफुली एंड हैव एन आइडिया दैट वेयर द स्टोरीज गोज। जब आप अपनी स्टोरी को छोड़ देंगे, दूसरे की स्टोरी को सुनेंगे, तो आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा कि अब स्टोरी किधर जाने वाली है। जब आपको आइडिया आ जाए कि स्टोरी की थीम ये होने वाली है, देन डिसाइड दैट ग्रुप, ओके जेंटलमैन, as the most of us just number this and this make a story around this so we can move this theme if you are all agree। ऐसे आपको मूव कराना है। if you get the chance, if you don't get the chance, listen the group what they are talking about, they are talking about theme, number of character and this, so you think about further ahead। okay, let's just they are deciding the theme, so see, okay gentlemen, as we finalize the theme, that is the theme, so let's include the action into the story and these much can the actions of the story, and thereafter keep silent for 30 to 1 minute 30 seconds to 1 minute। thereafter make another further step to the group discussion that helps to group move forward। thereafter then the group discussion, then again make a point to group to move forward and discussing with the group, be a engaged person with group who contributing to the group towards the common story, not putting his or her ideas to the group, like listen my story, listen my points, these are the points, these are the best story, not, you have to be engaged with the such group in a such a way that you come to a common consensus to make a group in forward direction। okay, there is no right and wrong story, you have to come a common consensus of a group story। story can be different from a story, can be same from a story। so these are the tips from my side to get screened in। any other doubts if you have, you can write in comments, or for the practice you can join our Telegram group। I will share the Telegram channel and group IDs in the description box। okay, and one thing remember, for the screening process the practice is necessary and must। if you didn't practice well for a screening process, so you can't hope for the screening। जय हिंद gentlemen, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, and hope you see in the Telegram groups।